So when we did this sum, okay, here they had just said calculate the balance sheet ratios और कुछ बोला नहीं था, okay, but I taught you कि पहले vertical balance sheet बनाओ and then make a balance sheet ratio. So exam में तो they will mention whether you have to prepare it or you don't have to prepare it, ठीक है. जब तक question silent है, it is better what do you do, मतलब if you make the balance sheet, what happens, your efforts are saved than for writing everything. बैलेंस शीट से क्या आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, ओके, बट देन इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी क्विक. यू हैव टू बी क्विक बिकॉज बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर उसके बाद रेशियोज कैलकुलेट भी करना होता है इसके, ओके. इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली वेल एंड गुड. जैसे आज हम करेंगे, आज हम डायरेक्टली करेंगे. ये ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, दिस इज अ ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. आई विल नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू फॉर्मेट, okay. I will directly start calculating the ratios, okay. So let us start now. Following is the balance sheet of Roland Limited, okay. Asset this side, liability this side, okay. So start thinking. Cash in hand, it's a current asset. Cash at bank, current assets. Bills receivable, current asset. Debtors, current assets. Stock, current assets. Advances, current assets. Furniture, fixed assets. Machine, fixed assets. Land and building, fixed assets. Goodwill, fixed assets. Preliminary expenses, these are my miscellaneous expenditures. It will be subtracted from capital, ठीक है क्या. So ये है मेरा fictitious assets, या तो we call it as miscellaneous expenditure, okay. Then calls in arrears, calls in arrears in equity shares, so equity में से minus होगा, okay. Calls in arrears means unpaid, it's not paid to us. There is default in payment, okay, of equity shares, yeah. Okay. Now be more specific. Cash in hand, cash at bank, bills receivable, debtors, okay. यहाँ से लेके यहाँ तक. What is this? Quick assets, okay. और specific होना है ना. Stock non quick है, yes. Advances quick है, yes, okay, okay. And this is my preliminary expenses written off. This one I write here. This is my miscellaneous expenditure. Okay. And this one will be subtracted from equity share capital. Right? Next, come to the liability side. Equity share capital, preference share capital, ये तो सब मैं ले लूँगी under shareholders funds. Debentures, so this is my borrowed funds. Just a minute. Yeah. So this is my borrowed funds. 8% public deposit, ये भी borrowed funds में आएगा. Bank overdraft. This is current liability, yes. Creditors current liability, unpaid dividend current liability, outstanding expenses current liability. Reserves will be added to shareholders fund, okay. ये दोनों shareholders fund में आएगा, shareholders funds. Reserves add to shareholders funds. Provision for tax current liability. P&L account, it's a reserve, add to shareholders funds. Okay. अभी इतने सारे मैंने करंट लाइबिलिटीज मार्क कर दिए. अब इसमें से क्विक लाइबिलिटी एंड नॉन क्विक कौन सा है? सिंपल. देयर इज ओनली वन नॉन क्विक लाइबिलिटी एंड दैट इज बैंक ओडी, ठीक है. तो ये रहा, दिस इज नॉन क्विक, बाकी सब क्विक है.
ओके, नीचे क्या बोला है? कैलकुलेट द रेलेवेंट बैलेंस शीट रेशियोज. ओके, रेलेवेंट ना, ठीक है. रेलेवेंट मीन्स ऑल, या यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द सिक्स. Anjali Gupta is there in this meeting. Anjali Gupta, kindly rename yourself with a roll number and acknowledge it in the chat box. Rename yourself with roll number. Okay? Yeah. Now start. Is the question clear to everyone? Question is understood? Just acknowledge it in the chat box. Okay? So we are not going to make a vertical balance sheet. हम directly start करेंगे to solve ratios. ठीक है? तो इतना डिटेल में मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है. Right? Yeah. Thank you students. Thanks. चलो start calculating the ratios now. First one, current ratio. Current ratio. So the formula is current assets upon current liability. ठीक है? Leave one line and write where calculate current asset is equal to quick assets plus non-quick assets. ठीक है? अभी क्विक एसेट्स का लिस्ट बना. क्विक एसेट्स में what do I have? Cash in hand, cash at bank, 2000, 10,000. Right here has to be a detailed one. Huh? Next, bills receivable 30,000. Receivable 30,000 plus 70,000. Next, stock छोड़ दो. On 20,000 advances. Advances. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. For bill 1, 2, 3, 4. Okay. Now total it. Total of quick. Okay. 12,000 plus 30 plus 70 plus 20. So the answer is 1,30,000. So right here 1,32,000. Okay, like this. Yeah, good Jyoti, very good. Next, नॉन क्विक में अपने पास एक ही है, स्टॉक. लिखो स्टॉक कितना है? 40. राइट हियर 40,000. टोटल कर दो. ये तो आइटम है इसमें. ठीक है? So you have to write this total non quick. है? So 1,32,000.
दोनों को ऐड कर दो. Add both of them. 1,32,000 plus 40 is 1,72,000. So my total current asset is equal to 1,72,000. Okay. Same way, calculate current liability. Start. Where current liability is equal to current liability is equal to quick liability plus non-quick. Same way. पहले क्विक देखो कितना है. या 60 and 10,000 and 7,000. 60,000, 10,000, 7,000. Creditors, unpaid dividend, then outstanding expenses, then provision for tax 20. All these abbreviations you can use. Provision for tax 20,000. और बैंक लोन सॉरी बैंक ओडी कितना है. बैंक ओडी 40. दो बैंक ओडी 40. करो इसको. This is my total of quick liability. 60 plus 10, 70, 70 plus 20, 90, 90 plus 7, 97. Total non-quick. दोनों को ऐड करो. Total current liability 97 plus 40. 1,37,000. So right here 1,37,000. Okay. Substitute करो. Right here 1,72,000. Substitute करो इधर. 1,72,000 divide by 1,37,000. Solve it. 1,72,000 divided by 137. So 1.255. Make it 1.26. So लिखो. 1.26 is to 1. So this is how you are going to write the final answer. Clear this? Everyone, it's clear to you? Just acknowledge it in the chat box. Current ratio समझा. बिना बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट बनाए हमने कैलकुलेट किया. Yes. Okay. Yeah. Thank you.
जितना इसको डिटेल में सॉल्व करोगे ना तो नेक्स्ट रेशियो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. नेक्स्ट इज नॉट क्विक रेशियो. तो अभी क्विक रेशियो तो मेरे पास सब रेडीमेड बना हुआ है, सिर्फ मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. सेकेंड वन देखो, क्विक रेशियो. क्विक रेशियो. So you should know the names of all the ratios because exam में वो लोग लिख के नहीं देते find this ratio. They say you find the relevant ratios. So quick asset और quick liability. सब रेडीमेड अपने पास है. अभी कैलकुलेट भी किया. क्विक एसेट्स कितना है टोटल देखो 1,32,000. सो राइट हियर 1,32,000. नेक्स्ट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटी देखो. क्विक लाइबिलिटी कितना है 97. So 1,32,000 divided by 97,000. So 1.36. Right here 1.36 is to 1. Final answer in a box. Okay, next. Third ratio. Ratio was what? Stock to working capital ratio. Closing stock upon working capital into 100. Next third ratio later. Stock to working capital. This is not minus sign, this is a dash hyphen. Stock to working capital ratio. Formula is closing stock. स्टॉक बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100. लीव दैट स्पेस. स्टॉक कितना है? ये रहा एनक्यूए में है ना, ये स्टॉक यही है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000. लिखो इधर 40,000 राइट हियर 40 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. देखते हैं कितना है. वर्किंग कैपिटल तो मिल जाएगा राइट. Working capital is equal to, what is the formula for working capital? Current assets minus current liability. ठीक है. तो current assets अपने पास है, अभी तो कैलकुलेट किया राइट. now 172 minus 137. 1,72,000 minus 1,37,000. 1,72,000 minus 1,37,000. कितना है आंसर 35,000. So right here my working capital is 35,000. सब्स्टिट्यूट करो इसको इधर 35,000. कैलकुलेट करो 40,000 डिवाइड बाय 35,000 into 100. So 114.285. You can make it 29. ठीक है. 114.29. लास्ट लेक्चर ही हमने किया था. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो शुड नॉट बी हाउ मच मोर देन 100%. है ना. इसका मतलब है डेड स्टॉक है तुम्हारे पास, बिक ही नहीं रहा है, गोडाउन में पड़ा ही है. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. एक सिर्फ करंट रेशियो निकालने में इट टेक्स अ बिट टाइम बिकॉज यू हैव टू डू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. देन करंट एसेट में आल्सो यू डू द बाइफरकेशन एंड कीप क्विक एंड नॉट क्विक. तो क्या हो जाएगा आपके लिए इजी हो जाएगा. सेकेंड रेशियो भी क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल भी आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट फोर्थ रेशियो proprietary ratio. Proprietors funds upon total assets into 100.
proprietary ratio, sorry, 4. Okay, proprietary ratio. Proprietors fund या shareholders fund भी लिख सकते हो. Shareholders fund or you can write proprietors fund also. Okay, एक ही बात है. On total assets, पहले निकालो shareholders funds. So write the formula where shareholders funds is equal. Start writing. Huh? It is first equity share capital, then preference share capital. Yeah, write down. No? S falls in arrears. CIA बोलते हैं इसको. Okay, falls in arrears. Then add reserves and surplus. Okay, reserves and surplus में भी what do I have? Reserves account and एक P&L भी था आपके पास. Okay, ये सब हो गया. इसके बाद less miscellaneous expenditure, or you can even write fictitious assets. It's one and the same. Okay? Fictitious assets word लिखोगे तो भी चलेगा. Okay? तो miscellaneous expenditure में अपने पास क्या था? Preliminary expenses. Preliminary expenses. ये सब तामझाम के बाद आपको क्या मिलेगा? Shareholders funds. ठीक है? चलो start. Equity share capital. 1 lakh, preference भी 1 lakh था. Right here. Right here. 1 lakh. This is also 1 lakh. Calls in arrears was how much? 5,000. Okay. Reserves and surplus. कितना था? 1,50,000. Reserves 1,50,000. There was one P&L account of 20,000. And preliminary expenses written off as how much? 10,000. Okay. And now calculate. ये जो आंसर मिलेगा, दिस इज माय शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स फंड. ठीक है, एक ही बात है, मैं घड़ी घड़ी वही रिपीट कर रही हूँ. लैक्स माइनस 5,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20 माइनस 10,000. So my answer is 3,55,000. Okay. 3,50,000 is my shareholders funds. Simultaneously start giving your attendance in the chat box. That. And pay attention here also. Huh? So right here, 3,55,000. Okay. अब हम निकालेंगे total assets. Okay. चलो let us do that. लिख देती हूँ. Total assets का क्या फॉर्मूला है? Total assets is equal to fixed assets plus long-term investments plus current assets. Okay.
चलो पहले फिक्स्ड एसेट्स को टोटल करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का टोटल नहीं है मेरे पास। फिक्स्ड एसेट्स में मेरे पास क्या क्या था? फर्नीचर था, या राइट ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना था? 30,000। ठीक है, फिर मशीन था मेरे पास, मशीनरी था 1 लाख। फिर मेरे पास था बिल्डिंग, आई मीन लैंड एंड बिल्डिंग, 2,20,000। Then I had goodwill. Can use this shortcut, sir. 30. That's it. इसको total करो. This is total of fixed assets. 1,30,000 plus 2,20,000. 1,30,000 plus 2,20,000 plus 30. 3,80,000. So right here, 3,80,000. Okay. Long term investments है ही नहीं अपने पास. जाते हैं. Not there. Nil. Current assets अभी हमें मिला. करंट एसेट्स कितना था? या 1,72,000. 1,72,000. चलो करो, कैलकुलेट करो सब. फिक्स्ड एसेट्स 3,80,000 प्लस 1,70,000, 5,50,000. So 5,52,000 is my total assets. Total assets, yeah. Substitute. 5,50,000. 5,52,000. So 3,55,000 divided by 5,52,000 into 100. 64.31. So write down 64.31%. Answer को box कर. Okay, this is my answer. Okay, so you have to solve like this. Next, shareholders funds हो गया. अभी debt equity ratio, debt upon equity into 100. Next, I mean fifth one. Fifth, debt equity ratio. Formula: borrowed funds मतलब loan funds upon shareholders funds, or you can write proprietors fund. एक ही बात है. शेयर होल्डर्स फंड तो मेरे को पता है, अभी मिला था 3,55,000. यस, 3,55,000. बोरोड फंड्स निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल. बोरोड फंड्स इज इक्वल टू, तो बोरोड फंड्स में मेरे पास क्या था? दो चीज थी. एक तो वो 7% डिबेंचर्स, और एक और था 8% पब्लिक डिपॉजिट्स. तो डिबेंचर्स कितने का था? 40, और पब्लिक डिपॉजिट था 20.
Yeah, your answer. Take the total. So my total is 60. So I did here 60. So 60,000 divided by 3,55,000. The answer is 0.169 to 0.17. Not further. 0.17 is to that's it. This is debt equity. Last, capital gearing. Sixth one. Capital gearing ratio. Okay. So formula is preference shares capital plus debentures divided by equity share funds. Only equity, huh? Equity shareholders. Okay. Start. Write this down. No? Write it down. We are doing